Hello, welcome to the series of engineering graphics. To explore this series we have Professor Sandip Kale with us. He has more than 10 years of teaching experience in this field. In this series we will get to learn engineering graphics, 2D and 3D computer-aided drafting packages, engineering curves, projection of point and lines, projection of solids, basics of orthographic and isometric projections, and development of lateral surfaces. Let's dive into this and enhance our imagination. Let's start with Chapter 2. Hello all, today we will start with engineering graphics module number 2. Module number 2 is basically dedicated to software package, that is AutoCAD. Okay, see, whatever we will learn in all these 9 modules or entire syllabus of engineering graphics is by hand drawing with the help of different instruments like drafter, set squares, pencil, eraser, pro circle, compass. All these instruments we will use and we will solve all the problems, or we will draw all the solutions on a paper sheet, right? Drawing sheet. We have seen already the standard sizes of drawing sheet which we are going to use. So for A3 size drawing sheet or drawing paper or drawing book we are going to use for daily practice, and for submission purpose we are going to use A2 size or A1 size drawing sheet. Okay, so whatever we will learn in this entire syllabus, that we can draw with the help of computer software package which is known as AutoCAD. So there are different software packages available in the market. So I will start with this. So you can go to Google, you can search Autodesk official website and you can download it free trial version. For students it is, as per my knowledge, 1 month free trial version you will get. Okay, so just download and install that software in your computer system. Okay, so this icon will be visible on your desktop. If you double click on this icon, you will get user interface of AutoCAD software, right? So like this. So before going to software, there are n number of softwares available in the market for different purposes or applications like CATIA, ProE, Solid Edge, Unigraphics, STAAD Pro, 3D Pro. Okay, so depending upon different fields, different softwares are available. Okay, AutoCAD is a very basic software which is used in first year engineering students to let them have few introductory knowledge of the drafting software package. Okay, so this is the user interface of AutoCAD. So we will start with new file. Okay, so here you will see user interface. Okay, so as this is module number 2, but what I will suggest, first you all go through all 9 modules, okay, and then you come to this module number 2. Why? Because whatever we will learn in all those modules, that only we will draw here with the help of different tools, and those tools we will learn today. Okay, so this is normal user interface. So this is first different windows, different tools you can see on this particular window or interface, user interface. This is called as user interface. So various toolbars you can see on this user interface. This is first menu bar. Okay, home, insert, annotate, parametric. So these are all menus available on your menu bar. So below the menu bar you can see different tools, like this is line, polyline, circle, arc. So all different toolbars are here. Okay, this is the drafting window or drafting passage where we will draw our drawing. Okay, now here you will see a command window where you can directly give the command to the software that I want to draw a line, and then software will proceed with your command, whatever command you have given to it. Okay, so these are some supportive tools like model, snap mode, ortho mode, or different types of modes are used. So that we will see one by one when we start drafting on this particular software package. Okay, so first of all, for first year engineering students, we have some important tools to learn, right? So as this is our first basic practical, so this software you will learn in practical session only, because this is not a theoretical part. Okay, so you should practice this at your home also, or you can practice it in your college also. Okay, so different toolbars here. We will start with our first drawing with some few basic tools, right? So these are different toolbars. Okay, so if you right click on any one toolbar, you will get some show panels. So these are different tool panels or palettes we can see. Okay, so these are different tool palettes like draw tool palette. If I click on draw,
draw is already here, right? But if I click here on draw toolbar, you can observe that there is no draw toolbar here now. Okay, so if you click on any tool, right click, show panels and add toolbar. So these are n number of toolbars here. You can also drag it, like click and drag it here. So this is the basic draw toolbar. This is basic modify toolbar. Okay, this is properties toolbar, then layers. So for this particular section we don't need layer toolbar, so we will remove the layer toolbar here from here. Okay, dimension or annotation toolbar is very important, so we need these toolbars. So these are basic toolbars. Even view, clipboard, edit, these toolbars are not required, so we will utilities also not required. Not required means not required for our syllabus. Okay, because we are going to learn very basic drafting problems by using this tool, right? So different toolbars are here. Okay, so these four toolbars are important from my point of view for first year engineering students, that is draw, modify, properties and annotation. Annotation means dimension. So I will arrange these toolbars here. Draw, okay, first draw toolbar, or I will again paste it here only, draw. You can just drag and drop it, modify, then properties and then annotation. These four toolbars are very important from our point of view. Okay, one more toolbar is there, that we will see later. See, first of all, line. So I can draw the line by selecting this tool only. So if I click it, what it will ask? Specify first point. So I can click here for first point of line, okay, or second point, right click, enter. So you will get a straight line. Okay, right click, enter. Now the importance of this mode, as see here, grid mode, snap mode and ortho mode. These are important tools. See here, you can see this grid mode on and off. So for our syllabus, this grid is not that much important. Okay, so you can remove the grid also, or if you want you can keep it as it is. Okay, so by clicking it on this particular tool. Okay, so here you will find customization. That means here also you can add or remove these particular tools from this window, okay, or this toolbar. So right now it is not needed. Only three important basic tools are needed. First of all, grid, then snapping mode. So snapping mode is off right now. Okay, so you cannot see any snapping. Snapping means what? Key points. Key points, that means start point, end point, midpoint. So right now if you move cursor over this particular line, you will not get any point. But if I on this snapping mode, then you will get all the tools or snap settings, object snapping. So I will select all the snapping points or positions, keep it on always to get the detail of. Okay, so now you can see I have, if I want to draw another line here, so here square, it specifies end point of the line. Okay, triangle specifies midpoint of the line, and square specifies end point of the line, that is starting point, midpoint and end points. Okay, you can see here, if I off this particular snap mode, okay, so no, okay, now snap mode is, so okay, already we have taken all the snaps. So here you can see I have switch off the snap mode so that I cannot get any end point, midpoint or starting point position on this particular line. I would suggest all of you to keep the object snapping mode on. So select all. Okay, snap mode is on now. If I select the line, I will get again
center point, mid point and starting point over here. Okay, so this is related to snapping mode. Now, as you know that we need to draw either vertical or horizontal line, perfect vertical or horizontal line. So by using this orthographic mode, see, now I can draw inclined line, no doubt. Okay, but if this orthographic mode is on, you will see, though I am clicking cursor here, still what it will do, it will take either horizontal or vertical lines only. So wherever you click the cursor, it will always take either horizontal or vertical line. Okay, so this is the beauty or importance of this ortho mode. If I switch off this ortho mode, then same with the same line I can draw inclined lines also. See here, inclined lines, inclined lines, inclined lines. If this ortho mode is on, I cannot draw inclined lines. Only vertical and horizontal lines can be drawn with the help of this mode, right? So we will erase Control A and delete. We will erase it. So now अब हमें क्या क्लियर हो गया है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्रिड मोड, देन स्नैपिंग मोड, देन ऑर्थो मोड। ओके, ये बाकी के जो मोड्स है वो 3 डायमेंशनल ड्राफ्टिंग जब हम करेंगे उसके लिए हमें यूज करने होंगे, बट फॉर योर सिलेबस ये बाकी के ज़्यादा टूल्स हम यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी वास्ट सॉफ्टवेयर पैकेज, बहुत बड़ा काम इस पर इंडस्ट्री में चलता है, इंडस्ट्रीज इसके ऊपर काम करती है, लेकिन फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें ही हमें सीखने हैं, लाइक दीज 4 टूल बार्स। ओके, उसमें से फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन इज पॉलीलाइन। सो पॉलीलाइन इज अ लाइन टाइप वेयर यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स मोड ऑफ कर सकते हैं, एट अ टाइम ऑन कर सकते हैं। इफ आई वांट टू ड्रॉ आर्क आल्सो, सो वी कैन ड्रॉ आर्क। तो ये पॉलीलाइन का इंपॉर्टेंस है। तो जो नॉर्मल लाइन है और पॉलीलाइन है, इसमें डिफरेंस क्या है कि एक ही लाइन अलग अलग मल्टीपल टाइम्स पे हम कंटिन्यूसली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल लाइन है, मैंने एक बार ड्रॉ कर लिया तो वो ये ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पॉलीलाइन के केस में सी हियर, इफ आई वांट टू स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क, आर्क अगर मुझे अभी यहाँ पर ड्रॉ करना है, सिंपली आई विल राइट ए, एंटर, सो it will ask me to specify end point of the arc. So here will be your arc. Okay, then specify L, line, enter, again line, again arc, enter. Okay, so this is the importance of polyline. So polyline is combination of different commands, different features. Okay, for by using straight line we can only draw lines, not arcs. Likewise, okay, but by using polyline we can draw multiple features. Okay, Control A, delete. Now next is a circle. Okay, so circle, there are different types of circle. If you click on this particular drop down menu, you will get circle with center and radius if the center and radius is given, circle with center and diameter, 2-point circle if we want to draw a circle which is passing through 2-point circle, 3-point circle if we want to draw a circle which is tangent to 2 lines and it is having 1 radius, or tangent to 3 lines. So these are different types of circle. Normally we are drawing circles with center point and radius. Okay, so center point, specify the radius, for example 100 millimeter, enter. Okay, you can zoom in or zoom out this, okay, by using this scroll bar on the mouse. Okay, this is navigation toolbar. So you can use this navigation toolbar here. I would first on the navigation. So pan, zoom, likewise, for example pan. This is the full navigation toolbar. Zoom, pan, for example we can shift it from one place to another place, pan, then zoom in, zoom out, likewise, or rotate, so we can rotate this. Okay, then different navigation
commands we can use here. This is orbit, free orbit or continuous orbit we can select. Okay, so without any orbit we will go with this UCS, front view, top view. This is the UCS. Okay, now we can select the views here like front view, top view. So navigation is not that much required. Okay, we will continue with any one view. So we have selected the top view. So we can move this UCS like this. Okay, so circle we can draw like this. After circle, arc, there are number of types of arcs we can draw with the help of this drop down menu. So you can select any one of these. So for example, first by default it is 3-point arc. So first point, second point and third point. Right click, enter. If we want to repeat any command, so simply right click and repeat that particular command, previous command, 1, 2, 3, likewise. Okay, so these are number of arcs you can draw depending upon the requirement in your drawing. Okay, right now it is all these commands are not needed. Next point is rectangle. So specifically this rectangle can be drawn by using diagonal points. So first diagonal point and second diagonal point. You can also draw a rectangle by specifying, or you can modify the dimensions of the rectangle, no doubt in that. Okay, so next, in this rectangle drop down menu you will find one more tab, that is polygon. Okay, polygon, see here, first of all it will ask us to enter number of sides. So by default it is 4 sides are there. Okay, 4, enter. Okay, specify center of the polygon inscribed in a circle. So this is what 4 equal side means, a square. Okay, so you can specify the radius of the circle, or you can also modify or name or give dimensions to this particular square. Okay, now next again polygon, specify number of sides. For example pentagon मुझे अगर draw करना है तो 5, enter, 5, enter. Now inscribed in a circle. Okay, so it will ask us to draw और specify the radius of the circle. सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए? 50. ओके, सो 50 रेडियस का ये पेंटागन है. यू कैन गिव डायमेंशंस, तो डायमेंशन का टूल बार भी बाद में हम देखेंगे. ओके, सो लाइकवाइज आपको पॉलीगॉन में कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा हेक्सागन. ओके, आप इसे रोटेट भी कर सकते हो, मिरर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, एंड दिस इज इलिप्स. इलिप्स, सो अगेन इन ड्रॉप डाउन मेनू यू विल लर्न दैट देयर आर 3 different types of ellipse we can draw, or elliptical arc we can draw. For example, ellipse, center, major axis and minor axis. ellipse, repeat ellipse, repeat करेंगे. सेंटर लेंगे पहले मेजर एक्सिस का डिस्टेंस एंड देन माइनर एक्सिस. माइनर एक्सिस मुझे कितना चाहिए वो. सो दिस इज द इलिप्स. सो दिस इज फर्स्ट ड्रॉ टूल बार. बाकी के आप बाद में प्रैक्टिस करो क्योंकि n नंबर ऑफ टूल्स आर देयर विच इज नॉट पॉसिबल टू कवर इन वन मॉड्यूल. ओके, सो सेकंड वाला जो है विच इज मॉडिफाई टूल बार. सो मूव इज द कमांड. समटाइम्स व्हाट वी नीड टू डू, एक बार हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर लिया, अब मुझे इसको ये इस जगह पर नहीं चाहिए, मुझे इसको किसी और जगह पे लेके जाना है. मूव कमांड इज यूज्ड. मूव कमांड जब मैं सिलेक्ट करता हूँ व्हाट विल इट आस्क. सो एवरी टाइम आपके कर्सर के पास में जो विंडो है वहां पर आपको दिखाई देगा. इट विल आस्क सिलेक्ट ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे मूव करना है? चलो मुझे ये इलिप्स मूव करना है, तो इलिप्स के ऊपर हम जाएंगे, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक. ओके, तो क्या करेगा, स्पेसिफाई कौन सा पॉइंट से मूव करना है. तो सेंटर से मुझे मूव करना है. कहां पर मूव करना है? जहां पर मूव करना है वहां पर जाके हम उसे लेफ्ट क्लिक से छोड़ देंगे. क्लियर? मूव कमांड. अगेन आई विल रिपीट इट. रिपीट मूव. अब फॉर एग्जांपल मुझे ये हेक्सागन यहां पर नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेफ्ट,
राइट, लेफ्ट और लेफ्ट। क्लियर? एक जगह से दूसरी जगह पर मैंने क्या किया, उसको मूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ओके। सेकंड, कॉपी कमांड। कॉपी, अब मूव कमांड में क्या था, जैसे मैंने मूव कर लिया तो पूरा ऑब्जेक्ट वहां से उठा के मैंने दूसरी जगह पे डाल दिया। ना कॉपी कमांड, एक बार मैंने फॉर एग्जांपल ये पेंटागन मैंने एक ड्राइंग में ड्रॉ कर लिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि 10 पेंटागन चाहिए। तो 10 पेंटागन कैसे, 10 बार मैं रिपीट नहीं करूंगा वो प्रोसेस ड्रॉ करने की। तो आई विल गो टू कॉपी कमांड, अगेन लेफ्ट राइट लेफ्ट, कितने चाहिए मुझे, 1 2 3 4। ओके, लाइकवाइज 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने चाहिए उतने मिलेंगे, जितने चाहिए उतने, मल्टीपल कॉपीज, बेस वाला एज इट इज रहेगा। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडिफाइड टूल बार। ओके, स्ट्रेच, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेच क्या करना है, लेफ्ट राइट, अब किस पॉइंट से स्ट्रेच करना है, इस पॉइंट से कहां तक, फॉर एग्जांपल हियर, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, अब एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, या इस पॉइंट से मुझे उसको स्ट्रेच करना है। ओके, तो जैसे ही, अब ये यहां पर सिंगल एंटिटी था। ओके, जब मल्टीपल एंटिटीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी तो उस केस में मुझे अगर इसकी सिर्फ एक लाइन मुझे स्ट्रेच करनी है, फॉर एग्जांपल लाइन से अगर मैं कोई ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं, यहां पर 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स। ओके, एंटर। अब मुझे अगर इसको स्ट्रेच करना है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेच, क्या क्या सिलेक्ट हो गया, सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर मैंने एक पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट किया था, इसलिए रेक्टेंगल पूरा मूव हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ ये लाइन मेरी स्ट्रेच हो गई, राइट क्लिक, अब मुझे कहाँ से स्ट्रेच करना है, इस पॉइंट से, कहाँ तक स्ट्रेच करना है, इस पॉइंट तक स्ट्रेच करना है, सिर्फ वो लाइन को मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। ओके, देन रोटेट, रोटेट कमांड, फॉर एग्जांपल रोटेट कमांड मैंने सिलेक्ट कर ली, अब मुझे इसको क्या कहा है, ये हॉरिजॉन्टल है रेक्टेंगल, मुझे इसको वर्टिकल बनाना है, या फिर ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल है तो मुझे इसको रोटेट करना है, लेफ्ट राइट, इस पॉइंट से उसे रोटेट करेंगे। तो आप चाहे जो भी एंगल को रोटेट करना है आपको, किसी चीज को आप रोटेट कर सकते हो। कंट्रोल ए डिलीट, मैं थोड़ा ये विंडो क्लियर करूंगा, उसके बाद में आगे के कमांड्स हम देखेंगे। मिरर कमांड, फॉर एग्जांपल कोई चीज है जो आपने गलती से, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट था तो आपने ऐसा ड्रॉ कर लिया और आपको ऐसा नहीं करना था, इसका मिरर इमेज चाहिए था। ओके, मिरर इमेज आपको ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन अब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, कभी कभी हम हाफ पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं और उसको मिरर करते हैं, सो दैट वी विल गेट फाइनल ड्राइंग। ओके, तो ये जो मिरर कमांड है, मिरर सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4, ये सारे लाइंस मुझे मिरर करने। ओके, राइट क्लिक, अब वो क्या करता है, मिरर लाइन का पॉइंट, वो मिरर लाइन उसे चाहिए, ये मिरर लाइन को जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो ये पार्ट मैंने सिलेक्ट किया था उतना ही मिरर हो गया। अब सी हियर, फिर से एक बार और रिपीट करेंगे कमांड मिरर, अब मुझे ये पूरे लाइंस नहीं रिपीट करने, सिर्फ ये दोनों लाइन को मिरर करना है। राइट क्लिक, उनको दोनों को ही मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये एक्सेस मैंने दे दिया, देखिए सिर्फ 2 ही लाइन मिरर हो गए, एंटर। क्लियर, ये समझ में आ रहा है हमको कि जितना पार्ट मुझे चाहिए उतना ही पोर्शन मैं मिरर कर सकता हूं किसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल एक्सिस को। ओके, मिरर के बाद है स्केल, तो स्केल के लिए स्केल डाउन और स्केल अप ऐसा एक कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हम इधर ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ये क्या है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे इसका स्केल मैंने लिया है 1:100। ओके, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 10:100 में, थोड़ा सा उसको बढ़ाना है, तो क्या करूंगा मैं, स्केल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6, सभी लाइंस मैंने सिलेक्ट किए, राइट क्लिक, अब वो बोलेगा एक पॉइंट ऐसा ले लो कि उससे आपको स्केल करना है, ये देखो ऑब्जेक्ट आपका बड़ा हो गया। यू कैन एनलार्ज इट और यू कैन रिड्यूस इट, तो स्केल डाउन और स्केल अप आप कर सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट मेन्यूज। ओके, ट्रिम, सी ट्रिम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, ट्रिम कर दिया, जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए वो पार्ट मैं ट्रिम कर सकता हूँ, सिर्फ उतना ही पार्ट। जैसे डिलीट में या फिर एरेज में सभी पार्ट सिलेक्ट करके डिलीट हो जाते हैं, वैसे ट्रिम में अनवांटेड, फॉर एग्जांपल एस्केप। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ तक जाती है। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये पूरी लाइन नहीं डिलीट करनी। देखो अभी मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो पूरी लाइन सिलेक्ट होती है, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ तो पूरी लाइन डिलीट हो जाती है, फिर से मैं उस लाइन को ड्रॉ करूंगा, एंटर। ओके,
फिर भी मैंने अभी लाइन सिलेक्ट की तो पूरी लाइन सिलेक्ट होगी, पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। ट्रिम एक ऐसा ऑप्शन है कि जो अनवांटेड पार्ट है, इस लाइन के बाहर गया वो पार्ट है, वो अनवांटेड है, उतना ही मुझे ट्रिम करना है, बस उतना ही ट्रिम हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एरे। एरे दो टाइप्स के एरे है। फॉर एग्जांपल ग्रिल जब हम बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक ही डिज़ाइन मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सर्कल मैंने यहाँ पर ले लिया, अब मुझे क्या चाहिए, रो में नीचे 5 रोज और इधर 5 रोज, ऐसे सर्कल की रो चाहिए। तो हर टाइम पे मैं वो एक्सिस का लोकेशन लेके बराबर उधर ही सर्कल ड्रॉ करूंगा, फिर उसके नीचे उतने डिस्टेंस पे दूसरा सर्कल, टाइम ज़्यादा जाएगा। एरे इज अ कमांड, सिंपल कमांड। मैं क्या करूंगा, ये सर्कल सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, कितने एरो चाहिए मुझे, कितने चाहिए, स्पेसिफाई एंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 3 चाहिए मुझे, ग्रिड, तो 50 मिलीमीटर पे मुझे एक एरे चाहिए। ओके, एंटर। और दूसरा जो है वो 100 मिलीमीटर पे चाहिए, एंटर एंड एग्जिट। सो मिल गए मुझे, दिस इज द एरे। ओके, तो ये अलग अलग कमांड से यू कैन ट्राई इट एट योर होम ऑल्सो। आई विल सजेस्ट यू टू डाउनलोड स्टूडेंट वर्जन, 1 मंथ का फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है। आप ये आपके लैपटॉप के, आपके पीसी पे डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के सिवाय आपको पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हो गया मॉडिफाइड टूलबार। तो अलग अलग इरेज, देन दिस एक्सप्लोड, देन ऑफसेट, ये अलग अलग कमांड्स है, आप हर एक को ट्राई करके देखो। ओके, तो कंट्रोल ए डिलीट। अब मुझे नेक्स्ट जो टूलबार है वो है प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ओके, या फिर कोई आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ओके, या फिर कोई रेक्टेंगल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने ड्राइंग किया है इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल लाइन का थिकनेस, उसका कलर, उसका टाइप, जैसे हमने देखा था लाइन टाइप्स मॉड्यूल नंबर 1 में, थिक लाइन, थिन लाइन, डॉटेड लाइन, सेंटर लाइन, तो अलग अलग लाइन्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन चेंज इट्स कलर लाइक येलो, वी कैन चेंज द लाइन टाइप, थिकनेस 0.05 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ओके, सो लाइकवाइज ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज जो है लाइन की प्रॉपर्टीज। नाउ दिस इज बाय लेयर बाय ब्लॉक एंड कंटिन्यूस लाइन। अब मुझे क्या करना है कि नहीं, ये सर्कल है और ये मेरा पीस सर्कल है, तो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल इस सर्कल को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एस्केप, एक कंटिन्यूस लाइन लूँगा मैं, F8 है ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन करने के लिए, सॉरी ये ऑर्थो मोड हम अभी ऑन करके लेंगे, सो दैट परफेक्ट वर्टिकल एंड परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास होगी। ओके, एस्केप। अब ये लाइन जो है जिसने सर्कल के सेंटर को स्पेसिफाई किया है, तो वो कौन सी लाइन होनी चाहिए मेरी, वो होनी चाहिए सेंटर लाइन। तो ये सबसे नीचे जो बाय लेयर लाइन का टाइप है उसमें अदर्स में जाके हम अलग अलग लाइन टाइप्स इसमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, वो सेटिंग का पार्ट है। तो अदर, लोड एप्लीकेशन, कौन कौन से लोड करने मुझे, ये डॉटेड लाइन मुझे चाहिए, डॉटेड लाइन। ओके ओके, ठीक है। ओ लोड, फिर से कौन सा लाइन चाहिए मुझे, सेंटर लाइन चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये सेंटर लाइन है हमारी, राइट, तो ये सेंटर लाइन मुझे चाहिए। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब मैं ये लाइन एक्सिस सिलेक्ट करूँगा, आई कैन मेक इट अ सेंटर लाइन और आई कैन मेक दिस आल्सो अ सेंटर लाइन। जब आप इसको जूम इन करोगे यू विल गेट द लाइन एज अ सेंटर लाइन। थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करेंगे सो दैट आपको पता चलेगा। तो कलर जो होगा उसको हम रेड करेंगे। ओके, ये देखिए, ये जो हाफ वाला लाइन है उसको पहले हम डिलीट करेंगे। Now if you see, you can see the center line here. Okay, तो ऐसे अलग अलग लाइन टाइप्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ड्राइंग में। नाउ टेक्स्ट, इफ यू वांट टू ऐड टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो मैं क्या करूँगा, सीयर टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया, तो आई कैन राइट टेक्स्ट हियर लाइक सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1, एंटर। ओके, आई कैन change its font, I can change whatever I want
फॉर एग्जांपल 5 मिलीमीटर की उसकी हाइट होनी चाहिए मेरी, और उसका टाइप जो है वो कौन से टाइप का फाइल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन, तो ये टाइम्स न्यू रोमन में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसका कलर क्या होना चाहिए, तो कलर काइन कलर होना चाहिए। ओके, सो आई कैन डू इट लाइक दैट। सो अब ये क्या हो गया, ये देखिए मैंने लिखा है लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा हमें, बहुत छोटा हो गया। ओके, सो आई कैन मॉडिफाई इट। प्रॉब्लम नंबर 1, इसको डबल क्लिक जब हम करेंगे, कंट्रोल ए सिलेक्ट जब हम करेंगे, यहाँ पर 2.5 की जगह 50 एंटर, तो क्या बन गया वो, फिर भी 50 से भी उतना बड़ा नहीं हो गया, राइट। कंट्रोल ए, यहाँ पे 200, प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, तो ऐसे आप टेक्स्ट जो है इसको भी मूव कर सकते हो। ऑर्थो मोड ऑफ किया तो आप इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, so you can enlarge it again. So this is the problem number 1. Okay, पैन कर सकते हैं बाय लेफ्ट की, लेफ्ट माउस की लेफ्ट की और स्क्रॉल बार एक बार अगर हम प्रेस करते हैं तो पैन हो जाएगा, पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए पैन, लेफ्ट की और स्क्रॉल बार दोनों को एक ही टाइम पे अगर हमने ये किया, सिर्फ माउस के स्क्रॉल बार को मैंने रोल ओवर किया तो जूम इन एंड जूम आउट, ये दोनों फंक्शंस आपको मिलेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट टेक्स्ट। You can write the problem statement here, whatever you want to mention, the information about that particular drawing, कंपनी का नाम है, जिसने ड्राफ्टिंग किया है उसका नाम है, तो ये सारी चीज़ें हम टेक्स्ट बार यहाँ पर डाल के दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायमेंशंस। तो डायमेंशन में अलग अलग डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल लीनियर डायमेंशंस हम यहाँ पर दे सकते हैं। लीनियर डायमेंशन क्या है, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, ये डायमेंशन हमने दिया है। ओके, तो डायमेंशन कितना है वो यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एनोटेशंस है यहाँ पर हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स हम सेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक डायमेंशन पे जाइए, डबल क्लिक अगर हम करेंगे तो हमें उसकी भी साइज बढ़ाने का चांस मिलेगा। उसके टाइप्स वगैरह वो सब हम बढ़ा सकते हैं। ओके, टेक्स्ट स्टाइल्स भी हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं विद फैक्टर, रेगुलर, एरियल, हाइट ऑफ टेक्स्ट 50 या 500 यहाँ पर हम करेंगे, अप्लाई, सेट करंट, ओके, क्लोज। तो अब जो डायमेंशन हम देंगे ये डिलीट करेंगे। सी हियर लीनियर डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये है हमारा डायमेंशन। ओके, तो ऐसे एरो हेड्स भी हम एडिट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टूल बार फ्रॉम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू is annotation or dimensions. So we can give different types of dimensions over here, like linear dimension. To select, we will first of all keep objects mode, snapping mode on. Okay, so this is the dimension of length of the rectangle 30, right? Likewise we can give dimension to the circle, diameter or radius. So for example, for this particular circle we can give radius like R20, okay, or dimensions like angular dimensions. So angles we can give here, like angle between this line and angular dimensions, angle between this line and this line is how much. For example, I have a line like this, so angular dimension, the angle between this line and this line is specified. So this is the angle 43 degree. Likewise, you can apply
dimensions from this particular toolbar. Okay, so now what we will do, we will take one example, we will write down it here with the help of text. I will show you everything, how the text is specified. Okay, so square pyramid, side of base 30 mm and axis height 50 mm is resting on HP on one of its base side and triangular face containing that side makes 60° with HP. Draw the projections of the square pyramid. Okay, so this is the problem statement. I have written it here. We can modify it, like we can edit it here like 50. Yes. Okay, so we can change. Okay, change its color so that it will be visible to all of us. Okay, so white, I think 50 is not sufficient, so Control A square pyramid of side of base, move UCS, origin will be here. What we will do, we will move this text aside, we will keep it here only. Okay, and we will solve this problem here. So first of all, square pyramid side of base, I will change the color also. Red color. Okay, base 30 mm and axis height 50 mm. So what we will do, first of all, we will draw the square pyramid. Number of sides 4, enter, inscribed in a circle. So first of all, ortho mode on. Okay, we will rotate it. -90° angle, sorry, 45° angle, so that it will be perfect parallel to horizontal plane. Okay, we will move it here. Okay,
So as it is a square pyramid, we know that in case of square pyramid, we will have sharp edges connecting corners with the apex. Okay, so this is the top view of given square pyramid. Okay, now first of all we will draw one reference horizontal line, reference line, okay, or axis we can say. Now projections of this, enter, repeat line, enter, repeat line, from this, enter, repeat line. Okay, so this line should be which line? Center line. So we can load center line, dash line. Okay, we can load here center line. Okay, so we can select this line as a center line. Okay, okay, we will change the color of this particular line because this is a projection line, so we will make it yellow. Again, this is also yellow because these are projection lines. Okay, now we will take a line who is having how much? Axis height is 50 millimeter. So from this 50 millimeter is important. For example, this is the line. This is the apex of the cone. Enter. Okay, so this is the front view and top view of the given square pyramid. Okay, so first condition is satisfied, that square pyramid side of base 30 mm and axis height 50 mm is resting on HP on one of its base side. Okay, now triangular faces containing triangular face, that means this face containing that base side is makes 60-degree angle with the HP. So what we will do, we will first of all copy this complete triangle. Okay, from right click from this point to this point. Okay, escape, delete, delete. Okay, now what I will do, I will rotate it, rotate this and this complete part. Right click with respect to this point, the angle is how much? 60-degree. We will rotate it again. For example, this is the 60-degree angle. Okay, so the angle between these two we need to find out first. The angle is how much? It is 46 degree. So we will make it 60 degree. Okay, so rotate this and this, right click. So 46 plus
14, enter. So this will be the 60-degree angle. Now this angle of inclination is 60-degree, right? So we can modify this also, 60-degree angle. Okay. Now we can take projections of these points ortho mode on, because vertical lines we need to draw. Vertical, enter. Projections of this corner point, vertical, enter. Projections of repeat line, this point, vertical, enter. So control this line, and this line. All these are projection lines, so their color is yellow color as we have selected. Okay, escape. Repeat line from this corner, the projections. A repeat line from this corner, the projections, enter. Repeat line from this corner, the projection, delete. So repeat line from this corner, the projection, enter. So as these three lines are also a projection line, we will give them yellow color. Okay, now see, we will add a text over here so that we can give the names of the points. Okay, A, right. So here is the text. We will select it, we will make it 200 so that it will be visible to us. Okay, now we can copy this from this angle. We will place it here, 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 here. As we know, we have to give different names, like, okay, escape. Okay, so we can modify it again, we can change it, we can delete this. Okay, so now again line from this corner to the center, because this is the axis. From the color of this line is yellow line, as it is a projection line. Okay, then again we will repeat line which is nothing but axis, and this line, both are axis lines, so here we can select them as a center line. Okay, so these three lines, center lines, we will give them one special color, like violet color. Violet color is for center line. Okay, so here what we will do, we can do one thing. This is the projection of given square pyramid by using AutoCAD software tool. One more thing I want to highlight here. So I think there is some mistake, so be careful about it. We need to repeat these lines, as these are not perfect lines. Delete. So here also I will check. No, it is okay here, right? Yes, perfect. So what I will do, I will again repeat the line,
Be careful while drawing. Now you can see from this particular top view, if the direction of observer is given here, so we cannot see this point. So for this particular line, we need to select dotted line, dashed line, okay, and we will give it different color, or dotted line green color, okay. So here you will see okay. Now what we will do, we will change the name here, A, B, enter, C, D, base point O, apex P, base point O, apex P, B, C, D, O, P, A, B, C, okay. So this is the complete solution of given problem statement. We will delete this dimension, again we will give this dimension properly, angle of rotation 60, then side of base, so here again align dimension, linear, side of base, here we can edit the dimension, we can edit it, side of base they have mentioned that side of base 30, okay, and axis height, linear dimension again from this particular point to this point, axis height 50, okay. So this is the complete solution of the given problem statement. See, a square pyramid, side of base 30 mm and axis height 50 mm is resting on HP on one of its base side, and triangular face containing that side makes 60-degree angle with HP. Draw the projections of the square pyramid. Okay, so this is the top view. Again we will add top view text over here. This is the top view. I will copy it from this point to this point and I will edit it. Front view, okay, front view and top view, angle of inclination 60-degree and its projections with this axis and this dotted line. Okay, so this is all about solution of problem of this particular square pyramid. So you can also practice different types of problems by using these commands. Okay, so in initial time you will find it somewhat time consuming or lengthy process, but as you practice more and more, you will get your hands on this particular software package. So here
we have completed module 2, that is introduction to 2D or 3D drawing AutoCAD package is completed successfully. Thank you.